Good evening, friends. Good evening, my dear students. हीरो फिनकॉर्प प्रोजेक्ट के अंडर आज हम करियर अवेयरनेस वर्कशॉप्स का सिलसिला शुरू करने जा रहे हैं, जिसके अंदर हम हर रीजन में 3 करियर अवेयरनेस वर्कशॉप्स करेंगे। सबसे पहले आज हम वेस्ट जोन के लिए करियर्स इन साइंस की वर्कशॉप लेके आए हैं, जिसमें मिस रिचा गुप्ता, जो कि करियर एक्सपर्ट हैं, उनके द्वारा आपको समझाया जाएगा, बताया जाएगा कि साइंस में करियर्स जो हैं वो कौन कौन से हैं और आने वाले समय में क्या एंट्रेंस एग्जाम, क्या कॉलेजेस हैं जो उसके लिए अच्छे हैं। ओवर टू यू रिचा। Okay. Thank you so much, Shilpa, for this opportunity. And I'm really glad that, today we are going live, and I am blessed here to, introduce this career awareness workshop under Hero FinCorp. And this we are doing for the West region for the science background careers. So here, yeah. So we would be talking today about career in science. And to begin with, this is the project under Hero FinCorp and Ramankan Munjal Foundation, powered by Asman Foundation. So under this category, we have seen that, just a minute, I think screen sharing there's an issue with the screen sharing. Give me a minute. Yeah. I hope my screen is visible now. Yeah. Yes. So, yeah. So under this program, we have came across 3 different stages. जहाँ पे हमने सबसे पहले किया था एक करियर गाइडेंस का पोर्टल हमें दिया गया था, जिसका नाम है mysaarthi.org. आई होप आपकी सबके पास में ये mysaarthi.org का डैशबोर्ड एक्सेस है। एंड जब हम लोग इस पूरे वर्कशॉप में जिन भी करियर्स के बारे में वी विल बी टॉकिंग अबाउट, तो उनके बारे में आप जाके आराम से इस पोर्टल पे सारी डिटेल्स आराम से ढूंढ सकते हैं, समझ सकते हैं, उनके पाथवेज भी आइडेंटिफाई इजीली कर पाएंगे। सेकेंड, दिस प्रोग्राम वाज वी डिड आवर करियर असेसमेंट्स, एंड थर्ड इज दिस अ ग्रुप करियर सेशंस which we have started today for the West region. All right. So detailed report analysis has been already done, and I hope you are clear on that. Most of the people would be clear on that. So moving ahead with this, when we talk about science, generally हम लोगों के दिमाग में 4 major subjects होते हैं in science, that are physics, chemistry, maths, and biology. So physics and chemistry are mostly compulsory subjects in 11th and 12th also, and we have options in opting maths or biology. So today, right now, we would be starting with maths first. So PCM is the combination wherein we have many opportunities, जहाँ पे हमें बहुत सारी opportunities मिली हुई हैं और हमारे पास में काफी सारे career options हैं। बस mostly students को या parents को ये लगता है कि with PCM we are, we have to go into engineering, but ऐसा नहीं है। And to explain to this, we will be talking about many other regions या फिर many other clusters, career clusters, जहाँ पे we would be requiring PCM as a main combination in our 11th and 12th. So the first is engineering cluster, second is merchant navy, third is architecture, research, environmental sciences, information technology cluster, agricultural technology, and specialized courses. So we would be discussing each of these clusters one by one in the upcoming few minutes. So to begin with, let's talk about engineering first. So engineering, जैसे हम सबको मालूम है, BE engineering 4 years course होते हैं और 8 semesters होते हैं mostly in all the colleges. So इसके अंदर when we start thinking about engineering, we are mostly, into major 4 or 5 engineering are very common, like mechanical engineering, chemical engineering, electrical engineering, software engineers. But इसके अलावा भी बहुत सारे engineering background ही careers हैं जहाँ पे we can make a very good career, and उसके बारे में
I'll just explain you. First here is mechanical and automobile engineering. Mechanical engineering is a इंजीनियर जो कि मशीन्स के बारे में समझता है, मशीन्स कैसे बनानी है, किन पार्ट्स को यूज करना है, कैसे उसको असेंबल करना है. इनफैक्ट अगर कोई नई मशीन्स भी डिजाइन करनी है तो वी वुड बी नीडिंग अ मैकेनिकल इंजीनियर फॉर दिस पर्टिकुलर एरिया. Like this, automobile engineer is also engineering specialization, जहाँ पे automobile engineer is mostly working with automobile industry, जहाँ पे he would be still working with machines, but mostly in टू व्हीलर कंपनीज या फिर फोर व्हीलर कंपनी जो भी डिजाइन बनाती है, न्यू मॉडल्स लाती है, उनके ऊपर जो इंजीनियर्स काम करते हैं बैक एंड पे, उनके डिजाइनिंग पे, उसके स्ट्रक्चर्स पे, दोज आर ऑटोमोबाइल इंजीनियर्स. नेक्स्ट इज इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग. सो इलेक्ट्रॉनिक्स एज वी ऑल नो, जो भी सर्किट्स होते हैं, प्लग्स होती हैं, बैटरीज होती हैं, आजकल जितने भी इलेक्ट्रिकल चीजें हैं, रिमोट वर्किंग, रिमोट से चलने वाली चीजें हैं, इन सारी चीजों की जो सर्किट्स डिजाइन करते हैं, जो डेवलप करते हैं, these are electronics engineers. Next come electrical engineer. So electrical engineer, power engineer and nuclear engineer, in सबका although they have a different specialization, but yes, major focus is on electrical connections. यानी कि जितने भी हमारे यहाँ पे इलेक्ट्रिकल चीजें आप देख सकते हो या फिर इलेक्ट्रिकल मशीन्स आप देख सकते हो, उनमें जो भी सर्किट्स यूज होते हैं या जो भी उनकी प्लानिंग होती है, ये सारी चीजें करने के लिए हमें चाहिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियर. पावर इंजीनियर आप बोल सकते हैं, लाइक nowadays we prominently hear about solar energy, solar power. So इनके भी जितने भी टेक्निकल चीजें होती हैं, सोलर पैनलिंग, एवरीथिंग, ईवी कार्स, अब ये जितनी भी चीजें हैं, इन सबको इलेक्ट्रिकली जितने भी सर्किट्स लगते हैं जिन पे उनका काम होता है, इन सब के लिए हमें जिस इंजीनियर्स की जरूरत है वो है इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स. और यू कैन से पावर एंड न्यूक्लियर आर द स्पेशलाइजेशंस इन दीज करियर्स. नेक्स्ट when we move ahead is robotics and mechatronics. So robotics के बारे में तो हम सभी को मालूम है. Robotics is a very clear word, like it deals with robots. जो robots बनाते हैं, उन्हें डिजाइन करते हैं, उन्हें प्रोग्राम करते हैं और उनको फंक्शन करने के लिए एक सही डायरेक्शन देते हैं. These are robotics engineer. And mechatronics is basically an interdisciplinary branch of engineering, जहाँ पे आप मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स को क्लब करके एक स्पेशल एक स्पेशल इंजीनियरिंग फील्ड है जो को मैकेट्रॉनिक्स होता है. दिस इज वेरी सिमिलर टू रोबोटिक्स एक्चुअली. इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ रोबोट विच इज डिजाइन, उसकी जो भी सर्किट्स होते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स में या कंप्यूटर साइंस में उसका प्रोग्रामिंग होता है. तो ये जो सारी चीजों का कॉम्बिनेशन है, दैट इज मैकेट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग. ऑलराइट. सो नेक्स्ट इज सॉफ्टवेयर और आईटी इंजीनियर. नाउ हम लोग बहुत बार इसे क्लब करते हैं. सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इज टोटली डिफरेंट देन एक्चुअली मेकिंग द मशीन. इफ वी टॉक अबाउट मेकिंग मशीन, देन इट इज नॉट सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग. सॉफ्टवेयर इंजीनियर मतलब वो इंजीनियर होता है जहाँ पे आपकी जो भी पीसीज हैं या फिर जो भी मशीन्स हैं, जो ऑटोमेटिक मशीन्स हैं, उन सबको जो काम करता है, उन सब के लिए जो प्रोग्रामिंग करता है, सी लैंग्वेजेस, जावा, ये सारे प्रोग्राम्स बना के जो उसमें इंस्टॉल करता है, चाहे वो ऑपरेटिंग सिस्टम्स के हो या फिर वेब डेवलपमेंट के हो या फिर कोई सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के हो, इन सारी चीजों की जो प्रोग्रामिंग करते हैं, these are these IT people and the software engineers. So basically इनकी एक लैंग्वेज होती है, कंप्यूटर लैंग्वेज, जिसकी डिग्री इन्हें मिलती है, and they are they have that qualification and understanding of how these programs can work on different machines. So this is about software engineers. Next is civil engineering. Civil engineers are mostly those people who are designing एंड आर्किटेक्चरिंग. जो भी हम देखते हैं बाहर इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा होता है, रोड्स या फिर बड़े बड़े मॉल्स या फिर वेरियस इंफ्रास्ट्रक्चर, जितना भी हम इंडिया में है वो कहीं भी देखते हैं, जो स्ट्रक्चर है, जो बिल्डिंग्स है, ये जितना भी सिविल वर्क होता है इसके अंदर, ईट पत्थर का जितना भी काम है, साइट्स पे जो काम होता है, डैम्स बन रहे हैं,
रिवर्स बन रहे हैं, ब्रिजेस बन रहे हैं, तो ये जो सारी चीजें हैं, these all come under civil engineers. So this is the speciality, this is the special feature of civil engineers. Next is chemical or a petroleum engineers. So chemical engineers are those engineers जो कि केमिकल्स रिलीज जो होती हैं या फिर हमारे लैंड के अंदर जो अर्थ के अंदर जितनी भी केमिकल्स है उसके साथ में कैसे निकालना है, पेट्रोल है, डीजल है, वेरियस फ्यूल्स है, इन सब का जो मैकेनिज्म समझते हैं और उनको एक्सट्रैक्ट करने के लिए जो पढ़ाई करनी होती है, समझना होता है, ये सारी चीजें आती हैं केमिकल इंजीनियरिंग में। साथ में आपको बेसिक सारे जितने भी केमिकल्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज, उनके रिएक्शन, एक्शंस, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेराइटीज, ये सारी चीजें अगर कहीं पढ़ना है तो दैट इज प्लेस जहाँ पे आप केमिकल इंजीनियरिंग का यूज कर सकते हैं। Next come is our metallurgical engineering, जहाँ पे it's a studies of various properties and processes related to metal and its extraction. जैसे हम सब जानते हैं कि we have so many chemicals, so many metals जो कि पहाड़ों में या फिर नदियों में या इस धरती में भी हैं। तो इन सब के बारे में पढ़ना, इनको एक्सट्रैक्ट करना, कभी नदी में, कभी समुद्र में, तो इन सब का एक्सट्रैक्शन जो होता है, इन सब के बारे में पढ़ाई, इन सब की प्रॉपर्टीज, इन डिफरेंट केमिकल्स, मेटल्स के बारे में जो भी पढ़ाइयाँ होती हैं या जिससे भी रिलेटेड उनके एक्सट्रैक्शन, रिजर्व, उनको रिजर्व कैसे करना है और उनको आगे के लिए यूज कैसे करना है, उनका एनालाइज करना, सारी चीजें। द मेजर प्रोसेस इन दिस मेटलर्जिकल इज दैट ओनली कि उसका प्रॉपर्टी पढ़ना, उनका प्रोसेस पढ़ना, उनका एक्सट्रैक्शन पढ़ना, then also analyzing the all these details are the in the metal industry specifically is the major role of the metallurgical engineer. Next comes aeronautical engineer, जहाँ पे हम देखते हैं कि जितने भी स्पेस क्राफ्ट्स हैं, जितने भी जो भी चीजें उड़ती हैं हवा में, एरोप्लेन, हेलीकॉप्टर, जेट, और जितने भी हम लोग इसरो में या फिर स्पेस साइंसेस में जितने भी स्पेस क्राफ्ट यूज होते हैं या फिर ये एयरक्राफ्ट यूज होते हैं, इन सब का जो डिजाइन करता है, जो इन्हें बनाता है, वो है एरोनॉटिकल इंजीनियर। सो यहाँ पे मैं आपको एक चीज बताना चाहती हूँ, मोस्टली एरोनॉटिकल इंजीनियर्स आर मिक्स्ड विद many other things, like someone who's interested in flying a plane is also feels कि वो एरोनॉटिकल इंजीनियर करके वो प्लेन उड़ा पाएंगे। तो जस्ट टू करेक्ट यू ऑन दिस थॉट कि एरोनॉटिकल इंजीनियर ऑल्दो ही नोज, ही मे हैव दैट नॉलेज, बट वो लोग खुद कभी बहुत ज्यादा इन प्लेन्स को या फिर इन एयरक्राफ्ट को खुद नहीं उड़ाते हैं। जस्ट दे टेक अ ट्रायल, दे गिव द डिजाइन अहेड and the further process is taken care by other people. Next come is the textile industry, I mean textile engineering. Now when we see कि हमारे आसपास में कितना टेक्सटाइल है, टेक्सटाइल मतलब कपड़ा, तो जितने वेराइटीज के कपड़े हैं, उनके प्रिंट्स हैं और उनके कैसे थ्रेड्स यूज करने हैं। एक पर्टिकुलर कपड़ा बनाने में काफी सारे तरीके थ्रेड्स यूज होते हैं, एक नायलॉन होता है, कॉटन होता है, सिल्क होता है। So how to combine all of them, how to get them printed, how to technically do all these things is a part of a textile engineering in totality. So these are the major areas. There are many more engineering backgrounds jo after B, once you do your B, then you can go ahead and pursue them in your masters also, which you can just explore on the dashboard under career explores. When you go under engineering background, you will see many other options where you get specialization and super specialization in many other fields. So at this level, at undergraduation level, these are the major fields which are very commonly available in most of the engineering colleges. So now talking about the entrance exams, the major exams which is considered at national level is JEE. And JEE is valid for 23 IITs, 31 NITs and 26 triple ITs. So अगर आपको इनमें से किसी भी कॉलेज में अगर आपको एडमिशन लेना है at national level, you cannot skip JEE as an entrance exam.
Other than that, TES is also an entrance exam for technical entry scheme under Indian Army, under Indian Army. So if any one of you want to serve Indian Army and also want to pursue technical background, I mean, some of the engineering, then you can, directly um apply for, you can directly apply for Indian Army by TES under engineering background. And after you clear this degree, you will be also you will be awarded as lieutenant uh, in the Indian Army. But yes, under this PES Indian Army, they have entrance exam and many other physical tests also, जो कि आपको क्लियर आउट करने पड़ेंगे. अदर दूसरे राउंड्स जो हैं, टेक्निकल राउंड्स के अलावा भी बहुत सारे राउंड होते हैं दैट यू नीड टू क्लियर. नाउ मूविंग अहेड विथ बेस्ट इंस्टीट्यूट लेवल पे भी कुछ एंट्रेंस एग्जाम्स होती हैं, जैसे कि इंस्टीट्यूट लेवल पे हो गया. फर्स्ट है बिटसैट, VIT, VIT triple E, SRMJE, AMU triple E, and SMIT, MET. These are different exams of other institutes, private institutes in the engineering background. So अगर आप JEE के अलावा कुछ और भी exams देना चाहते हैं, कुछ अच्छे prominent school की very famous colleges, so you can look forward to these entrance exams as well. So if you talk about western state या फिर western area, जो western India region है, वहाँ पे कौन सी level की exams चलती है, then you can surely go ahead and attempt for MHCET, then Goa ki GCET and Gujarat ki GUCET. These are the state level examinations for the students who are interested in engineering. So other than these, professional degrees मतलब 4 साल के degree courses जो होते हैं वो, but other than that, you can also apply for diploma courses in engineering, which are called ITI courses commonly. So in these also we have, other many fields like mechanical, civil, automobile, electrical, computer, printing technology, plastic, polymer technology, garment fabrication, electronics, instrumentation and control, tools and die making. So ये जो सारे हैं, ये कहीं ना कहीं वो मेजर जो कोर इंजीनियरिंग के बात जो हमने मेजर कोर इंजीनियरिंग के बारे में जितनी भी बात की है, उन्हीं से रिलेटेड है. लाइक फॉर एग्जांपल, अगर मैकेनिकल इंजीनियर वहां पे एज एन डिग्री कोर्स में मशीन बना रहा होगा, तो मे बी डिप्लोमा जो इंजीनियर होगा, डिप्लोमा होल्डर, he would be performing on those machines and testing, trying and making those industries. So ये कहीं ना कहीं engineers के साथ में मिलकर काम कर रहे होते हैं, and they are helping the engineers in designing their work. So diploma courses are generally, can be pursued for 3 years after 10th also. And degree courses are 4-year courses, as I have told you. So this is something which you can look. One important thing is, if someone is interested in computers and not want to pursue as an engineer, then BCA can also be done as a substitute course for those who are not interested or who have not pursued science, I mean PCM in their 11th and 12th, but still want to continue with computers as a UG program. Then you can go ahead and take bachelor's in computer applications, जहाँ पे आप again वही सारी चीजें सीखोगे, like programming and everything. But yes, you must have math as a subject, because many colleges, they do need maths in 12th if you want to pursue for BCA. It's not compulsory, it depends on institute to institute level. Next career under PCM is merchant navy. Now what is navy? We all know navy मतलब कहीं ना कहीं पानी से related, defense से related, और इन्हीं सारी चीजों से रिलेटेड है, जहाँ पे आपको हो सकता है पानी पे या पानी के पास में कहीं पे भी काम करना पड़े, चाहे वो समुद्र हो, नदी हो या फिर बड़ी ओशंस हो. तो in merchant navy we have different bachelor's degree like BTech in marine engineering,
BTech in Marine Engineering, BTech in Naval Architecture, BSc in Nautical Science, BSc Shipbuilding and Repair, BBA Logistics, Retailing and E-commerce. Now, what is BTech Marine Engineering? So basically, सबसे पहले तो marine engineering जो होता है, that is जितनी भी शिप्स बनती हैं, जितनी भी डॉक्स पे जो शिप्स खड़ी हैं, उनका आर्किटेक्चरिंग है, उनका डिजाइनिंग है, वो थोड़ा डिफरेंट होता है. ठीक है, कुछ कमर्शियल शिप्स होती हैं और कुछ होती हैं जो कि नॉर्मल घूमने के लिए क्रूज टाइप की शिप्स होती है फॉर एग्जांपल. तो इन दोनों का जो डिफरेंस है, उनको किस तरह से डिजाइन करना है, उनकी जो जो इम्पोर्टेंट फैक्टर्स है या इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, उनको कंसिडर करते हुए उनकी डिजाइनिंग जो करता है वो है मरीन इंजीनियर. आर्किटेक्चर इज ऑल्सो पार्ट ऑफ इट, कि वो लोग हेल्प करते हैं उसको प्रॉपरली डिजाइन करने में, उसको स्ट्रक्चर करने में, उसका इंटीरियर एक्सटीरियर व्यू देने के लिए कहाँ में किस चीज की रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंगली. BSc Nautical Science is DNS, which is it's a bachelor's degree जो BSc कर सकते हैं, and DNS is Diploma in Nautical Science जो 1 year course है, जिसमें again you would be talking about साइंसेस की अलग अलग वेराइटीज की क्या होता है, पानी में कब कौन सा रिएक्शन आ रहा है, किस चीज का यूज करना है, किस चीज का यूज नहीं करना है व्हेन यू आर इन द मिडल ऑफ दिस सी और समथिंग. तो इन सारी चीजों की अगर हमको पढ़ाई करनी है तो दीज आर द बेसिक स्पेशलाइजेशंस. BSc Shipbuilding and Repair. It is not only about building it. Of course, maintenance is also one major important part of all this ships and बड़े-बड़े cargoes जो होते हैं उनका. So the one who's very professional in this particular area is this BSc Shipbuilding and Repairs. तो जो लोग इनको repair करते हैं, maintenance जो देखते हैं, these are those people. Now BBA Logistics, Retailing and E-commerce, you can say this is a neutral career irrespective of your stream in 11th and 12th. But yes, logistics मतलब जितना भी आता है, शिपमेंट इंपोर्ट होता है, एक्सपोर्ट होता है, उसका पूरा अकाउंटिंग रखना, उसको किस तरह से भेजना है, उसका कॉमर्शियल, उसका अकाउंट्स रखना, उनको भेजना, प्रॉपर चेक करना, क्वालिटी चेक करना, उनकी डॉक्यूमेंटेशन करना, ये सारी चीजें जो अगर कोई चेक कर रहा होता है तो वो है this person who is looking forward and working in the industry. So how can you enter into merchant navy? So the major entrance exam which you can pursue is IMU CET, and IMU CET is a exam which is considered and acceptable in 40 colleges of Indian Maritime University, and you can obviously go ahead and check them out there also. These are Indian Maritime Universities. 40 colleges are under them. Other than that, BSc, BTech and PG courses are also available, which one can pursue. Now, AIM, NET, IMU, DNS, ETO, GRE, all these are different, short-term, long-term courses in merchant navy. Like for example, B is marine engineer, which is 4-year program. AIM, NET is all India merchant navy entrance test, जो आप दे सकते हैं to again get into this merchant navy career. IMU is a diploma course. Then GRE is graduate marine engineering. ETO is electrotechnical officer. DNS is again मैंने जैसे आपको पहले ही बताया diploma in nautical science, which is a 1-year program, diploma course है ये. DME is one of them, is diploma in marine engineering, जो कि 2 years course भी है. Then BSc nautical we have already heard. So अगर आप देखेंगे तो merchant navy में when you work, it's very flexible. You have courses of 1 year, 2 years. 2 years के लिए है diploma in marine engineering, 3 years के लिए है nautical science BSc, and 4 years के लिए है BTech या फिर BE marine engineering. So these are the major areas you can check depending on your time and your availability and how much and where do you see yourself in this particular field.
Next is architecture and planning. So architecture and planning. So architecture basically means designing the building, and planning is basically, planning the layout of the land. So architecture and planning go hand in hand, because जो इंसान एक बिल्डिंग का पूरा आर्किटेक्चर बनाएगा, वो लेआउट का भी काम मोस्टली वही करता है, एंड दे आर कॉम्प्लीमेंट्री सब्जेक्ट्स टू अ करियर. Now, this is the 5 years program after your 12th BArch program, which is called Bachelor's in Architecture. NATA is one of the, national level exam. Then other than NATA, you can also go ahead and give JEE paper 2A for architecture. अगर आपका architecture पे focus है, then you must go and do 2A paper for JEE. And if you are more focused on planning, then you can go ahead and give JEE paper 2B. All right. So other than that, 2 IITs are there, like Kharagpur and Roorkee, जहाँ पे JEE advanced is also taken care. We need to give JEE advanced also if you want to pursue architecture and planning over there. All right. They also have their own exam, AAT, which you can pursue, and as an option, you can keep it ahead after that. So major colleges and most famous colleges in architecture and planning are SPA, Sir JJ College of Commerce, Chandigarh College of Architecture, and JNE, FAU, and NITs also. They also have architecture and planning courses in their curriculum. So other than that, if we talk about, colleges in Western region specifically, then Sir G.G. College of Architecture is in Mumbai, D.Y. Patil Pune, VNIT in Pune, and MI University. These are the, famous top colleges who are offering architecture and planning in their curriculum. Now let's talk about mathematics. Mathematics are often mixed, कि mathematics अगर हमारे पास मैथ्स में इंटरेस्ट है तो हमको सिर्फ इंजीनियरिंग में ही जाना है. This is a very common myth, but honestly speaking, actuary is one subject which one can pursue in mathematics. Actuary मतलब क्या? सबसे पहले तो actuary मतलब वो इंसान जो कि इंश्योरेंस, फॉर एग्जाम्पल आई एम टेलिंग यू, आपने इंश्योरेंसेस देखे, उनके प्रीमियम भरते हैं आप, तो ये प्रीमियम कितना होना चाहिए, ये कैलकुलेट अगर कोई करके देता है कंपनीज को प्रॉपरली, तो वो होते हैं एक्चुअरीज. सिर्फ प्रीमियम ही नहीं, बैंक्स में भी लोन्स का जो अमाउंट होता है, जो इंटरेस्ट होता है, या अदर फील्ड्स में term loan, different types of loans are available, long term loans, short term loans, term loans, insurance, general insurance, loan, and various types of insurance are available. So जो भी इन सब चीजों को डिसाइड करता है, उनका डॉक्यूमेंट रेडी करता है, उनके प्राइसिंग एंड पॉलिसीज डिसाइड करता है, these are those people actually. तो to become, अगर आपको इस करियर में इंटरेस्ट है, if you really want to go into this, then you can give ACET, which is Actuarial Common Entrance Exam, and then can directly apply to that particular career. Other than that, you can also use maths in data analytics. Now, data analytics, आज हम लोग बहुत लोग सुन रहे हैं, data analysis. What is data analysis? Honestly, data analysis is something जहाँ पे आपके पास में बहुत सारा huge data is there, and एक पैटर्न देखना है, उसको एनालाइज करना है, उसको समझना है कि किस कंडीशन में क्या आ रहा है, कितना किसका रिपोर्ट आ रहा है, डिपेंडिंग ऑन द सब्जेक्ट. तो डेटा एनालिटिक्स के लिए यू कैन गो अहेड एंड टेक मैथमेटिक्स में भी डेटा एनालिटिक्स होता है, स्टैटिस्टिकल डेटा एनालिटिक्स होता है, एंड इकोनॉमिकली भी डेटा एनालिटिक्स होता है, जहाँ पे डिपेंडिंग ऑन द सब्जेक्ट. फॉर एग्जाम्पल, अगर इकोनॉमिक्स की बात करें तो इकोनॉमी में कितना इन्फ्लेशन है, कितना ग्रो कर रहा है, जीडीपी क्या है, ये सारी जो चीजें होती हैं, ये सारी चीजें इकोनॉमिक्स के अंडर में आती है. बट अगेन मैथमेटिक्स इज कंपल्सरी फॉर दिस. All the careers here which we are talking about, we do have mathematics compulsory. Next come is programming. Programming में हम लोग generally सोचते हैं कि programming is all about, programming is all about softwares, codes, and programming like that. But no, there are different types of programming as well.
like financial programming and computational programming. So फाइनेंशियल प्रोग्रामिंग में आपको डिफरेंट डिफरेंट जो भी फाइनेंसेस होते हैं, जैसे स्टॉक मार्केट में, इसमें उसमें, तो उधर भी आपको मैथ्स की जरूरत होती है, जहाँ पे यू कैन एनालाइज द फिगर्स एंड डू इट. ऑलराइट. So if you want to do any of these, then ISI, which is Indian Statistical Institute, जहाँ पे you have Kolkata, Delhi, Bangalore, and Chennai, जहाँ पे you can go ahead and pursue these statistical courses. 4 colleges are there all over India. And other than that, you can also give ISIET, जो कि उसका entrance exam है. Beside this, you can also get these courses in Ferguson College of Pune and St. Xavier's College in Mumbai. So I hope I'm clear on this. If you have any doubts here, so please post all your queries in the chat box, because we would be answering each one of them at the end. I hope you're clear, and if you have any query, any doubt about any particular career, any exam or something like that, you can go ahead and talk about it. All right. Okay. So next, moving ahead, this was about PCM as a specialization. Now we will be talking about PCB, जो कि साइंस का एक बहुत important part है, जहाँ पे हम physics, chemistry and biology की बात कर रहे हैं. So biology is very important. Now what is biology? Biology can be study of anything, like for example, study of a body, I mean a human body, study of plants, study of animals. It can be, it can be a combination of any of these. So moving ahead with, first is allied medical sciences, second is medical sciences, agriculture and food science, fitness, nutrition and well-being, and the research part. सबसे पहले we will be talking about medical and allied sciences. The first thing which comes in our mind once after we see bio is MBBS, right? Doctor. Of course, doctor is a very, very common and very important career in medical science, of course. So we all know about MBBS. Any doctor you see, whether it's a child specialist or it's a bone specialist, cardiologist ho, child, heart specialist ho, neurosurgeon ho. So ये जो radiologists, endocrinologists, all these people who are working in different fields are, basically MBBS plus specialization in their field. All right. So MBBS is a common undergraduate program, which is again 5 years program after 12, जहाँ पे you have to go ahead and take NEET. NEET is the most important exam if you want to pursue MBBS in any field, any specialization. Second one is dentistry. Again, dentistry is studies related to teeth. उनसे related जितने भी है, orthodontist, various other field specializations are there under dentistry as well. But to pursue basic BDS program, again you have to take NEET and plus some other courses. All right. So dentistry is also they also come under medical only. But yes, not MBBS, but you can take it as a option. NEET is the exam which is required most of the times. All right. Third is veterinary science, which we all know. Veterinary science is, doctor of animals. So that is also one can pursue. Other than that, we have Ayush courses. Ayush courses मतलब वो उस तरह की मेडिकल स्टडीज जो ट्रेडिशनल इंडिया में हमारे पास थी. फॉर एग्जाम्पल BAMS, like bachelor's in Ayurvedic medicine and science. BUMS is bachelor's in Unani medicine and surgery. Then BHMS is bachelor's in homeopathic medicine and surgery. BNYS is bachelor's in naturopathy and yogic science. BSMS is bachelor's in Siddha medicine and surgery. So these are the Ayush courses.
to apply for any of these Ayush courses, you have to take an entrance exam, which is AIATGET, AIATGET or AAUVET, जो कि अलग अलग स्टेट एंट्रेंस एग्जाम्स भी हैं और कहीं कहीं काफी सारी इंस्टीट्यूट लेवल एग्जाम्स भी होती है, and which you need to check on when you select your colleges and other things. All right. After that, under medical and allied sciences, you can also see for nursing. Nursing is some when you talk about nursing is someone जो कि डॉक्टर्स को हेल्प कर रही होती है in the in treating patients like nurses, ward boys and other people. So that can also be considered. Then is physiotherapy. Physiotherapy is someone, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर किसी की सर्जरी हुई है किसी भी प्रकार की, फॉर एग्जाम्पल नी सर्जरी हुई है किसी की, तो वो पेशेंट जो है वो काफी टाइम तक बेड पे होता है, ही हैज अ बेड रेस्ट, बट आफ्टर ही कम्स आउट ऑफ द बेड रेस्ट उसको किस तरह की अपने पैरों को एक्सरसाइजेस देनी है टू स्ट्रेंथन दोज मसल्स, या किसी भी तरह का कोई इशू है बॉडी में जहाँ पे पेन्स है, जिसे हम with medicines or without medicines can be treated with physiotherapy and proper treatments. तो जो मशीन से या फिर एक्सरसाइजेस से हमारे मसल्स को स्ट्रेंथन करता है और उससे रिलेटेड जो भी पढ़ाई करता है, दैट कम्स अंडर फिजियोथेरेपी. And yes, this is also a very emerging and a popular career nowadays. Other than that, nutrition and dietitians. Now, if we can see, we are in the age जहाँ पे बहुत सारा फास्ट फूड मिल रहा है, पैक फूड्स मिल रहे हैं, एंड इंडिया या फिर अब्रॉड में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, बड़े हैं जो ओबेस हैं, तो इनको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है या जो चाहिए वो बॉडी के लिए नहीं मिल रहा है, एंड दैट इज द रीजन कि नाउ पीपल आर वेरी फोकस्ड at early ages and they are putting efforts in understanding their basic needs from these nutritionists and dietitians, and this is also very popular in upcoming careers जहाँ पे there is a huge growth जहाँ पे people are aware कि उनको कहाँ खाना है, कितना खाना है, कैसे खाना है. This is one thing they can do their own practice. Other than that, they can also be appointed by some companies. Like for example, suppose Lay's, for example Lay's, अगर Lay's एक चिप्स बना रहा है उसमें कितना न्यूट्रिशनल वैल्यू है, उसको कैसे और हेल्दी बनाया जा सकता है, ये सारी भी जो चीजें हैं that can be helpful if he takes a nutrition and dietitian as a career. The top medical colleges in India are AIMS, as we all know. Of course, AIMS is a very good college, which is a very AIMS New Delhi comes under top colleges, but AIMS anyways are at different locations are available, and they all have very good doctors and faculties all over India. Armed Forces Medical College Pune, Christian Medical College Vellore, Jipmar Pondicherry, St. John's Medical College Bangalore, Maulana Azad Medical College Delhi, D.Y. Patil Pune, Grand Medical College Mumbai, Madras Medical College Chennai, KIMS College in Bangalore, Banaras Hindu University, Indian Institute of Ayurvedic Paramedical Sciences Jamnagar, then Government Ashtanga Ayurvedic College Indore. So there are so many colleges all over India available. There are many government colleges, there are many private colleges as well who are offering different types of courses under medical sciences. So other than that, we also have many colleges in Western India also who are very popular, like Ferguson College, then Datta Meghi Institute of Medical Sciences, KJ Somaiya Medical College, GCS Medical College Nagpur, Mahatma Gandhi Institute of Medical Sciences, BJ Medical Science. There are many colleges in Western region also. If you don't want to pursue and go anywhere else, there are many good colleges which one can surely look forward to. Next come is agriculture. So that was all about medical sciences. Let's talk about medical sciences was study of human beings. Now we would be looking forward to agriculture, जहाँ पे we would be talking about plants
and how can you be pursue as a PCB student in agriculture. So agriculture nowadays, as we all know, that India is an agricultural country, and agriculture is always, an inseparable part of our country. Nowadays, when we see that, there are many farmers who don't want to pursue um, farming now, but their kids they want. So how can they look forward to these careers? First is agriculture. So agriculture is the basic agriculture जहाँ पे you can look for techniques, learn techniques, technology. How can you implement them with the traditional practices, and how can you increase the yield of the crops and everything. So it's a study of basically agriculture itself. Second is horticulture. Horticulture is the study where just sorry. हाँ. So horticulture is hello. Yeah. So horticulture is basically study of how can you increase the yield at smaller level. Suppose for example अगर किसी को भी देखना है तो कैसे combinations करने हैं किसी चीज के. आज हम देखते हैं कि there are experiments done in agriculture also to increase the yield, to increase the taste. कई बार हमको taste है वो पहले सिर्फ हम मौसम भी देखते थे और संतरा देखते थे फॉर एग्जाम्पल अलग अलग, लेकिन अब हमारे पास कई बार ऐसा भी फ्रूट आता है जिसमें मौसम्बी और संतरा दोनों का मिक्स टेस्ट होता है. तो हाउ इट इज डेवलप्ड, इट इज डन बाय अ हॉर्टिकल्चरिस्ट. सो दे एक्चुअली डू एक्सपेरिमेंट्स, दे इट्स अ स्टडी ऑफ एवरीथिंग जहाँ पे आप ये सारी चीजें कर सकते हो. फ्लावर्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, everything. It's not related to only fruits, but yes, it is related to everything. जहाँ पे फ्रूट्स वेजिटेबल्स सभी के बारे में आप कर सकते हैं. Alright. So next come is agronomy. Now what is agronomy exactly? People with knowledge of crop soil. Agronomy में ये लोग सारी चीजें soil से related पढ़ाई कर रहे होते हैं. And climate, then crop. ये सारी चीजों को कैसे mix करके how can you make best use of how can you make it best for the agriculture. इस तरह की सॉइल यूज करनी है, उसकी फर्टिलिटी बढ़ानी है तो क्या करना है, इस तरह का क्लाइमेट अच्छा है इस तरह के क्रॉप के लिए. ये सारी जितनी भी पढ़ाइयाँ होती है या फिर इससे रिलेटेड जितने भी करियर्स होते हैं, जो भी एक्सपर्ट्स होते हैं, दे आर कॉल्ड एग्रोनॉमिस्ट. नेक्स्ट कम इज फॉरेस्ट्री. सो इफ यू सी कि फॉरेस्ट के बारे में कितना अवेयरनेस हो गया है. काफी सारे लोग थे जो पहले फॉरेस्ट पे ध्यान नहीं देते थे. वी हैव अब आजकल काफी सारे लोग ग्रीन हो गए हैं. दे आर ग्रोइंग न्यू ट्रीज, फॉरेस्ट उगा रहे हैं, वहां पे कुछ कुछ चीजें कर रहे हैं. तो जो भी इन चीजों के बारे में पढ़ रहा होता है, उनको सेव एनवायरनमेंट के ऊपर पढ़ना है, फॉरेस्ट के अंदर जो कैंपेन्स करना है या उनको प्रोटेक्ट करने के लिए जो कैंपेन करना है. फॉरेस्ट डिपार्टमेंट्स होते हैं अलग अलग गवर्नमेंट में या फिर कहीं पर भी अलग अलग. फॉरेस्ट में अब आप देखते होंगे हर जगह डिपार्टमेंट है, एंड देयर आर मेनी रूल्स व्हिच आर अप्लाइड ऑन दीज फॉरेस्ट्स. तो ये सारी चीजों की जो भी डिटेल पढ़ाई कर रहा होता है या उनके बारे में अंडरस्टैंडिंग लेके उनको प्रोटेक्ट करने के लिए जो बात कर रहा होता है, दीज आर दोस फॉरेस्ट्री पीपल. ऑलराइट. सो नेक्स्ट इज फूड टेक्नोलॉजी. Now, what is exactly food technology? Food technology is a very good career and very unexplored also. Reason is कि हम सब जानते हैं कि पैक्ड फूड हमारे पास आ रहे हैं, लेकिन ये पैक्ड फूड कैसे आ रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल आई गिव यू कि जिसकी न्यूट्रिशनल लेवल है, जैसे मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया कि इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू इतनी है, इसको कितना और हमको एज पर अगर हमको उसका कंसेप्ट है कि हमको उसको डाइट फुल बनाना है, डाइट से बनाना है, फ्राइड नहीं करना है या करना है, कितनी उसकी शेल्फ लाइफ हो सकती है, क्या क्वालिटी की चीजें हमें इसमें यूज करनी है, व्हाट कैन बी द स्पाइसेस व्हिच वी कैन यूज, व्हिच कंडीशंस आर टू बी यूज. ये सारी चीजें जो है ये फूड टेक्नोलॉजी डिसाइड करता है. और इतना ही नहीं, रिसेंटली आई हैव कम अक्रॉस अ वेरी गुड फूड टेक्नोलॉजिस्ट, जहाँ पे उन्होंने बताया कि टू अंडरस्टैंड देयर वर्क, उन्होंने बताया कि हर बैच जो भी बन रहा होता है एक पैक फूड इंडस्ट्री में, वो हर बैच का सैम्पलिंग टेस्टिंग होती है. तो वो सैंपल बराबर है कि नहीं उस बैच का पर्टिकुलरली, क्योंकि हर बार जब वो एग्रीकल्चर जो भी फार्मर से ये लोग
चीजें खरीदते हैं, फॉर एग्जाम्पल पोटैटोज खरीदते हैं चिप्स बनाने के लिए, या कोई और चीजें स्पाइसेस खरीदते हैं कहीं से, तो वो हर बार प्रोडक्शन चेंज हो जाता है। तो उसका टेस्ट कैसे मेंटेन करना है, एक स्टैंडर्डाइज कैसे रखना है, ये सारी चीजें जो अगर कोई बता सकता है तो वो है फूड टेक्नोलॉजिस्ट। तो फूड टेक्नोलॉजिस्ट के अंदर अगर हम बात करें तो ICAR, विच इज इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर एंड रिसर्च, यहाँ पे हम जा सकते हैं। एंड द एंट्रेंस एग्जाम फॉर दिस इज AIEEA, जहाँ पे आप इसमें एडमिशन ले सकते हो। देन BHU में अगर एडमिशन चाहिए तो UET, KCET, MHCET, डिफरेंट डिफरेंट स्टेट लेवल की जो CETs होती हैं, all these can also be done, and the course name is generally BSc under any of these specialization. So हाँ, अगर हम इसको नेशनल लेवल का जो एग्जाम है विच इज ICAR, तो अगर ये देना चाहते हैं तो वी हैव ऑप्शंस फॉर 4 कॉलेजेस, 64 स्टेट्स एंड 7 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, जो कि ये ICAR का स्कोर एक्सेप्ट करती है, एंड यू कैन गो अहेड एंड चेक विद दिस पर्टिकुलर एंट्रेंस एग्जाम एंड कैन परस्यू करियर अकॉर्डिंगली. This was about agriculture. So जो भी हमने बात किया है, these are all degree courses, basically BSc degree courses. But if you want to check with those, or you don't have time, you can also go ahead and check with few vocational programs in agriculture and food sciences, like plantation worker, dairy farmer, agronomy, livestock जो मेंटेन करते हैं, हॉर्टिकल्चरिस्ट, सॉइल कंजर्वेशनिस्ट, फिशरीज, पोल्ट्री, गार्डनर, फ्लोरिस्ट, देन कॉफी एंड टी प्लांटेशन. तो ये अगेन वोकेशनल करियर्स की जब हम बात करते हैं तो दीज आर दोज पीपल हु आर वर्किंग अंडर और विद दिस प्रोफेशनल पर्सन्स, उनकी हेल्प करने के लिए, उनको एड करने के लिए दे आर वर्किंग अलोंग विद दोज प्रोफेशनल्स. So again, vocational course is more about technical course, less of theory course, and anyone with the background can, pursue this career. Sorry. So let's talk about other careers like research. हमने medical पढ़ा, engineering पढ़ा, agriculture पढ़ा. Now let us understand कि research field में how can TC be helpful. सबसे पहले तो we would be talking about biotechnology. So what exactly is biotechnology? Bio plus technology is biotechnology. So understanding anything, so understanding anything related to biology, related to viruses, related to anything जहाँ पे हमको स्टडी करना है ह्यूमन बीइंग को या फिर उनके ऑर्गेनिजम्स को या किसी भी चीज को, तो दैट कम्स अंडर बायोटेक्नोलॉजी, जहाँ पे वी वुड बी एक्चुअली एनालाइजिंग द डेटास फ्रॉम द बायोलॉजिकल डिपार्टमेंट एंड अंडरस्टैंड देम इन अ प्रॉपर वे. नेक्स्ट कम माइक्रोबायोलॉजी. माइक्रोबायोलॉजी का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल मैं आपको बता सकती हूँ. अभी रिसेंटली हम सब ने जो फेस किया है दैट इज कोरोना वायरस. तो जो लोग उसके ऊपर स्टडी कर रहे थे, वो एक नया वायरस था जब वो आया था, और जो लोग भी उसके ऊपर स्टडी कर रहे थे और समझ रहे थे कि क्या वायरस है, इसका नेचर क्या है, इसका डेवलपमेंट किस तरह से हो रहा है, कितना प्रोमिनेंटली ये पास ऑन हो रहा है, ये सारी चीजें जो स्टडी कर रहा था वो ग्रुप था माइक्रोबायोलॉजिस्ट का ग्रुप. और they were actually studying it under माइक्रोस्कोप. तो जो भी ऑर्गेनिजम्स को या जो भी फंगस, सेल्स, वायरसेस जिनको एक्चुअली माइक्रोस्कोप के नीचे देख के स्टडी करना पड़े, दैट इज रिलेटेड टू माइक्रोबायोलॉजी ऑनेस्टली स्पीकिंग. सो दिस इज हाउ माइक्रोलॉजिस्ट वर्क. ऑलराइट, तो अब आप समझ सकते हो कि आपका अगर आप माइक्रोबायोलॉजी में इंटरेस्ट है तो आप किस तरह का करियर सोच सकते हो, रिसर्च वाला, इन्वेस्टिगेटिव वाला. अगर आपके पास इस तरह की स्किल्स हैं जहाँ आपको किसी के रूट कॉज तक जाना है या समझना है किसी चीज को, देन यू कैन गो अहेड एंड start with microbiology, can think about microbiology.
Then zoology is, as the word itself says, it's a study of animals, different animals. So if you are an animal lover and you just want to learn about more about their nature, their food, their development, their history, whatever it is, if any kind of a study related to animals is under zoology. Botany, botany as a name specifies, botany is a study of plants, different types of plants, how can they react, how will they grow, how will they take, how will they grow, whatever it is, the study of plants is botany. Then comes bioinformatics. This is the very, trending career, which means bio plus information. अब हम लोग देखते हैं, there are so many data का हर जगह बहुत यूजेज है. तो उसी तरह से जब हम मेडिकल हिस्ट्री या फिर मेडिकल रिसर्च डेटा, इस तरह की चीजें जब एनालाइज करते हैं, उससे पता चलता है कि मतलब उसको जो एनालाइज करता है वो है बायोइन्फॉर्मेटिक्स, जहाँ पे बायो की इंफॉर्मेशन यूज हो रही है. तो बायो की इंफॉर्मेशन मतलब जैसे हम लोग बोलते हैं इतने % लोग ओबेस है, इतने % लोग डायबिटिक पेशेंट है, इतने % डिप्रेशन में है, इतने % सुसाइड कर रहे हैं. तो ये जो स्टैटिस्टिक्स है, ये जो फॉर्म होता है, ये जो पूरा स्टडी होता है, रिसर्च होता है ऑन इंफॉर्मेशन ऑफ बायोलॉजी is done by bioinformatics professionals. Then come forensic sciences. अब forensic science के बारे में हम बहुत कुछ जानते हैं thanks to CID, क्योंकि जब भी हम किसी क्राइम स्पॉट पे जाते हैं तो वहाँ एक फॉरेंसिक डिपार्टमेंट जरूर आता है, चाहे वो मूवीज हो चाहे सीरियल्स हो. तो फॉरेंसिक डिपार्टमेंट का एक्चुअली काम यही होता है कि वो अंडरस्टैंड करे कि ये, फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी की डेथ हुई है तो वो कौन है, मेल है, फीमेल है, कितने दिन, कितने घंटे, उसका DNA क्या है. ऑल दो स्टडीज आर अंडर फॉरेंसिक साइंसेज. हम सभी को पता है, हमने बहुत सब लोगों ने CID जरूर देखा होगा. So everything related to those, areas जहाँ पे you are helping, various departments in understanding कि क्या हुआ था and scene record करने के लिए. So those all come under forensic sciences. Okay. Next is pharmacology. So pharmacology is basically study of medicines. Pharma, हमें सबको पता है, pharma is the study of medicines. So जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बताया, माइक्रोबायोलॉजी वाले का काम है कि न्यू वायरसेस को ढूंढना, उसका कल्चर निकालना, उसका नेचर क्या है ये देखना. वैसे ही फार्माकोलॉजी, जैसे ही उनका नेचर पता चलता है, कोई भी वायरस आ रहा है, अगर उसका नेचर पता चल रहा है तो उसके ऊपर क्या दवाई ट्रीटमेंट करेंगे, उसके ऊपर जो रिसर्च है, उसके ऊपर जितना भी एक्सपेरिमेंट्स है, वो सारी चीजें जो कर रहा होता है वो है फार्माकोलॉजिस्ट. सो those who are making medicines, introducing new medicines every now and then, जितनी भी मेडिसिन मार्केट में है, ये किसी ना किसी फार्माकोलॉजिस्ट ने बनाई है, डिजाइन की है अकॉर्डिंग टू द नीड. एंड उसको कहाँ पे कोई सफर कर रहा है उसके ऊपर असर होना चाहिए, दूसरी चीजों पे नहीं. इन सारी चीजों का ध्यान रख के जो भी ये सारा काम कर रहा होता है वो है फार्माकोलॉजिस्ट. सो आई होप आई एम क्लियर ऑन ऑल दिस थिंग्स. If there are any questions, please post it down in the in the chat box so that we can reply you on the same. All right. So entrance exam for pure sciences, जो हम लोगों ने अभी जितनी भी चीजें देखी हैं रिसर्च फील्ड में, these are called pure sciences. And if you want to go ahead and take careers in this, then you can surely take ISET, ISIET, Indian Statistical Institute. मैंने बताया है, Bachelor in Maths and Bachelor in Statistics. You can go ahead and take them. These are open for non-science backgrounds also, but Maths is compulsory. So please take a note कि अगर आपको statistics में कहीं जाना है या Maths में कहीं जाना है, तो 11th 12th में, even if you are a non-science student, it is okay, but Maths is compulsory everywhere. ठीक है. Secondly is second exam which we can take as ICER, जहाँ पे ICER 7 campuses में अवेलेबल है. Its own exam, ये उसकी खुद की एग्जाम है जो कि KVP
KVPY है, किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना, ठीक है। सो ये 7 कैंपसेस में आप अप्लाई कर सकते हो आईसेल। नेशनल एंट्रेंस स्क्रीनिंग टेस्ट NEST स्कॉलरशिप प्रोग्राम है फॉर एडमिशन इन नाइसर एंड DAE और होमी भाभा रिसर्च इंस्टीट्यूट। सो यू नो कि हमारे इंडिया में बहुत सारे रिसर्च इंस्टीट्यूट्स भी हैं अच्छी, जहाँ पे इफ यू वांट टू गो एंड अप्लाई फॉर प्योर साइंसेस यू कैन श्योरली चेक विद दीज एंट्रेंस एग्जाम्स। एम्स, you have paramedical sciences, JIPMA you have paramedical sciences, and इंस्पायर में ऑल इंडिया लेवल एग्जाम्स होते ही हैं अब, तो you can go ahead and take these exams for pure sciences. All right, now, oh sorry, so top colleges जहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो and the entrance exam related to that are all over India level पे IISc Bangalore जहाँ पे 4 years का BS प्रोग्राम होता है and you can apply there with JEE Advanced, NEET और KVPY से भी, either of these exams are eligible for these particular college. DAE या होमी भाभा रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है वहां पे you can apply via NEST, नाइसर भुवनेश्वर via NEST, आइसर 7 campuses, आइसर टेस्ट और KVPY। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के लिए आप 10 कैंपसेस में अप्लाई कर सकते हो उनकी, जहाँ पे यू हैव टू गिव CUET। देन इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट में ISIET इज देयर एंट्रेंस एग्जाम। BSc courses in IIT is not only for engineering students, they have many good BSc courses also. So if you want to go ahead and go, if you have a dream of getting admission into IIT and want to study in IIT, then you can surely go ahead and check with BSc courses as well. They have many good courses, but yes, entrance exam which they need is JEE Advanced. BSc courses in BITS is again BITSAT, Shiv Nadar University Noida, SNU SCT, Azim Premji University Bangalore. Now if we talk about Western India के जो colleges हैं वहाँ की अगर हम लोग बात करें, then we have Ferguson College, Ram Narayan Ruia Autonomous College, Shri PHG Municipal Arts and Science College. Other than that, also we have many good colleges who offer BSc courses, and can pursue in that. So these are the top colleges in pure sciences. So if you have any queries, we are done for this. If you have any queries, just post it in the chat box and I'll be happy to cater your queries. Please note we do have our sessions tomorrow and day after tomorrow, 22nd November and 23rd November, where we would be talking about careers in commerce and neutral careers, and also careers in arts and humanities. So you can also find how they are clubbing, how can you club, और जो भी myths है आपके आर्ट्स को लेके, कॉमर्स को लेके या साइंस को लेके, that we can talk about. Okay, so there is a query about NEET. कि NEET क्या है? NEET is an national level entrance exam for medical, जहाँ पे you have to start preparing or NEET, preparing for this particular entrance exam, especially if you are interested in MBBS and dentistry or such courses in medical courses. Allied and paramedical sciences, they have different just a minute, I'll just stop sharing so that it will be easier for everyone to see. All right. So talking about NEET, yes, NEET is an entrance exam जिस query आई है, जो कि medical entrance exam है, which is conducted by the NTA, which is a national testing agency, and this is the UG level का भी एक NEET होता है and PG level पे भी एक NEET होता है. We will not be talking about PG level NEET, we would be talking about the UG level NEET. So NEET के अंदर अलग अलग टेस्ट के हिसाब से, एग्जाम कोर्स के हिसाब से they have their cutoffs, different colleges have their cutoffs. NEET के अंदर it is not important कि वो सिर्फ MBBS के लिए ही है, it is also applicable for few Ayush courses also,
देन एम्स में, जिपमर में, सभी जगह पे इसको कंसिडर किया जाता है। बीडीएस में भी हम काफी सारी जगह पे, डेंटिस्ट्री में भी हम काफी सारी जगह नीट का स्कोर कंसिडर कर सकते हैं। काफी सारे कॉलेजेस, अच्छे वाले कॉलेजेस नीट का स्कोर कंसिडर करते हैं। Okay, so next query is about allied and paramedical science. So what is allied and paramedical sciences? Basically, allied and paramedical sciences are those sciences जहाँ पे we can talk about not directly doctors, but yes, about those people who are helping doctors, या फिर hospital में या hospital management में they play an important role. For example, audiologist, then dialysis technologist. तो ये dialysis technologist for example अगर मैं consider करूँ, तो dialysis technologist क्या कर रहा होता है? वो directly patient को treatment नहीं दे रहा होता है, but वो जो dialysis की machine है उसे वो patient पे लगाना, फिर उसको check करना properly work कर रही है कि नहीं, and then उसका report doctor को देना, उसका ये काम है। इसी तरीके से बहुत सारे different machines use होती हैं इन द मेडिकल लाइन, जहाँ पे हर एक इसका एक स्पेशलाइज्ड पर्सन होता है, जैसे डायलिसिस टेक्नोलॉजिस्ट, देन रेडियोलॉजी टेक्नोलॉजिस्ट, देन एक्सरसाइज फिजियोलॉजिस्ट, देन ऑर्थोपेडिक टेक्नोलॉजिस्ट, सो मेनी, मतलब जितनी मशीन्स उतनी ज्यादा मशीन्स के स्पेशलिस्ट। तो वैसे ही इमरजेंसी एंड क्रिटिकल केयर टेक्नोलॉजीज, देन hospital management, hospital administrator, these are also very important things which can be considered. Hospital management में if you have a background of BSc या फिर कहीं ना कहीं अगर आपको उतनी understanding है, then of course it is good to have that, because ultimately you'll be working in the same industry. So hospital management may also plays a very important role. So these are people who help a doctor in performing his work in a better way, in a systematic way. तो ये सारे लोग जो होते हैं they come under allied and paramedical sciences, जहाँ पे you don't need NEET, you don't need to qualify NEET, but you can pursue, for example, hospital management अगर आपको करना है, so you can go ahead and take BBA degree in hospital management or healthcare administrator or healthcare management or similar disciplines. तो इस तरह का अगर आप कोई भी कोर्स करते हो तो फिर you can be a hospital administrator. It is not at all compulsory कि आपके पास में 11th 12th में साइंस ही होना चाहिए. This is what we call as a neutral career, जहाँ से आप irrespective of your stream, चाहे आप साइंस के हो, कॉमर्स के हो या फिर ह्यूमैनिटीज के हो, you can still pursue those careers, and these careers are called neutral careers. Yeah. So radiation, there is a question about radiation technology, I guess. So radiology is a person who, अगर आपने देखा होगा, जो सिटी स्कैन कर रहा है, एक्सरे कर रहा है या फिर MRI कर रहा है, जितनी भी टाइप की स्कैन होते हैं, या सोनोग्राफी कर रहा है, ये जो प्रोफेशनल्स होते हैं ये रेडियोलॉजिस्ट होते हैं। और रेडियोलॉजिस्ट का जो डॉक्टर है, रेडियोलॉजिस्ट, उसको MBBS करना कंपलसरी है, लेकिन रेडियोलॉजी टेक्नीशियन जो होता है उसे MBBS नहीं करना होता है। अगर वो नीट नहीं भी देगा तो भी इट्स ओके, बिकॉज he ultimately comes under allied and paramedical sciences, जहाँ पे रेडियो टेक्नोलॉजिस्ट का काम है कि उन्हें जिस एरिया के लिए उनको स्कैन करने बोला है, डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है, वहां पे अंडर और रेडियोलॉजिस्ट, मतलब जो डॉक्टर MBBS डॉक्टर है रेडियोलॉजी का, उसके अंडर में ही परफॉर्म्स एंड टेक इमेजेस ऑफ दोज एरियाज जहाँ पे वो पेशेंट का प्रॉब्लम हो रहा होता है. सो he handles basically the radio technology. He's handling the machines which are used in radiology department. So yes, again, PCMB is one thing which is compulsory for 11th and 12th. And at UG level, you can take BSc in radiology, bachelor's in science, BSc in radiology or imaging technology or such similar courses. All right. So do we have any other questions?
I don't think we have any more questions. Thank you so much, Richa. All right. Thank you so Thank much, you so everyone. much. It was a wonderful session. And I would request students कि अगर आप इसे बाद में भी देख रहे हैं और आपके कुछ questions हैं, तो आप इसी वीडियो के नीचे आप अपने questions डाल दीजिए और हम उनको reply करने की पूरी कोशिश करेंगे. साथ ही साथ हम कल इसी 4 बजे करियर्स इन कॉमर्स और न्यूट्रल करियर्स के ऊपर प्रेजेंटेशन लेके आएंगे. एंड आई होप आप लोग उस प्रेजेंटेशन के लिए, उस वेबिनार के लिए भी ज्वाइन करें. थैंक यू सो मच मैम. थैंक यू. Thank you.